नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा वीडियो द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पार्ट 2। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि जो अर्थ है वो अंदर से एक सी नहीं है, होमोजेनस नहीं है, बल्कि अलग अलग लेयर्स में बटी है और चार मुख्य लेयर्स होती है जो क्रस्ट है, फिर मैंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। जो इनर कोर है वो आयरन और निकल का बना है और सबसे भारी और सबसे गर्म लेयर है। जो आउटर कोर है उसमें भी मेजॉरिटी आयरन और निकल ही है, लेकिन वो इनर कोर के ऊपर फ्लोट करती है और एक पिघले हुए मॉल्टन चॉकलेट या कैरामल की तरह की कंसिस्टेंसी। उसके बाद मैंटल जो कि सबसे मोटी लेयर है और मैंटल के भी अपने सब लेयर्स होते हैं। मैंटल का जो टॉप मोस्ट लेयर है और क्रस्ट, ये दोनों मिला के लिथोस्फेयर बनाते हैं जो सॉलिड है। और लिथोस्फेयर जो है पूरे अर्थ में एक सी नहीं है, वो प्लेट्स की बनी है, मतलब टुकड़ों में बटी है। और ये सब जानकारी हमें मिली साइज्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक और अर्थक्वेक के वेव्स के द्वारा। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका नाम है seismograph. In my last video, we discussed about the internal structure of the earth, and we discussed the internal structure of the earth is not homogeneous, but is divided into layers. The topmost layer is the crust, then comes the mantle, then comes the outer core, then comes the inner core. The inner core is the densest and heaviest part of the earth, followed by the outer core, which is kind of semi-solid, like that of a consistency of molten chocolate or caramel. Then comes the mantle, which is the thickest layer of the earth, followed by the crust, which is the thinnest layer of the earth. The crust and the topmost layer of mantle together form the lithosphere. And the lithosphere itself is solid, but is not continuous, but it is made of plates. And that's all we know about the structure of the earth. And how we know it? We know it through the branch of geology, which is called seismology, which is the study of earthquakes and earthquake waves. The instrument used to study the earthquake and earthquake waves is called a seismograph. So let's begin with the new information that I have in this video for you. In my last video, I also discussed that earthquakes happen because of natural and man-induced reasons. The natural reason is tectonic reasons, which I just discussed, because of the movement of tectonic plates, which happens because an internal disturbance below the surface of the earth happens. Like here, this is the internal disturbance happening because of below the surface of the earth. Then the next natural reason is the volcanic eruption, because when volcanic eruptions happen, the earth around that volcano also shakes and landforms are destroyed or created, and that's how volcanic eruptions also cause earthquake. Then there could be bomb explosion or nuclear explosion, which is a man-induced reason. And then is the collapse or land subsidence, which is yet another man-induced reason for an earthquake. So the question is, what is plate tectonics? Plate tectonics is a theory that suggests that lithosphere is divided into a series of rigid plates and is not continuous. And the relationship between plate tectonic movements and earthquake is that when these tectonic plates move in relation to each other, the earth shakes, and that's called an earthquake. So here, the earth is made up of continental plates and land plates. So this is the North American plate, then comes the Nazca plate, South American plate, the Arabian plate, the African plate, Indian plate, Filipino plate, Eurasian plate, Australian plate, the Antarctic plate, and there are numerous big and the Pacific plate, and there are numerous big and small plates. So some are oceanic plates and some are land plates. So oceanic plates are thinner but denser, whereas the lithospheric plate, the land plate, the plate on the land is thicker but less dense and more violent. Like it's less dense, so it mostly rises up, and the oceanic plate sinks down when an earthquake happens around a destructive plate boundary. So now, how do these plates move in relation to each other? Their movement is not of the same type in all kinds of earthquake. ये जो earthquake होता है, ये इनका जो movement होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो earthquake होता है, ये तो हम जान गए। पर ये जो मूवमेंट है, वो हमेशा एक सा नहीं होता है।
कभी कभी अर्थक्वेक होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में पास आते हैं और टकराते हैं। कभी कभी अर्थक्वेक तब भी होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में अलग होते हैं। और कभी कभी अर्थक्वेक तब भी होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट अगल बगल में और एक दूसरे के आगे पीछे स्लाइड हो जाती है। हर हाल में धरती हिलती है और अर्थक्वेक होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। थ्रस्ट फॉल्ट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। थ्रस्ट का मतलब होता है झटका और फॉल्ट का मतलब होता है क्रैक। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में पास आती हैं, कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्ज मीन्स टू कम टुगेदर। So when two tectonic plates come together, it's called a convergent plate boundary. इसको हम कंप्रेशनल collision और destructive plate boundary भी कहते हैं। I repeat, convergent plate boundaries को compressional, collision या destructive plate boundaries भी कहते हैं। सॉरी, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो कंप्रेशन होता है, धरती का कंप्रेशन होता है। आपस में जब मिलती हैं तो कंप्रेस हो जाता है, इसलिए दबाव बनता है, इसलिए कंप्रेशनल। डिस्ट्रक्टिव प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कभी ओशनिक प्लेट और लैंड प्लेट जब मिलती हैं तो क्या होता है, जो ओशनिक प्लेट है वो पतली तो है पर वो भारी है, तो इसलिए वो नीचे चली जाती है। और जो लैंड लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो लैंड के ऊपर जो प्लेट है वो ऊपर रह जाती है। तो जो ये पोर्शन है, ये जो ओशन का जो अंदर चला गया, लिथोस्फेयर के अंदर चला गया, ये एरिया तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं। कभी कभी ये डिस्ट्रक्शन नहीं भी होता है। जब दो प्लेट्स जब लैंड के ऊपर, जमीनी प्लेट्स जब ओशनिक, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं, सॉरी, जो लैंड प्लेट्स हैं उनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहा जाता है, और ओशनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं, तो दो कॉन्टिनेंट्स पास आते हैं, तब क्या होता है, तब दो कॉन्टिनेंट्स पास आते हैं और प्लेट कभी कभी आपस में झटका देती हैं और ऐसे खड़ी हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं कि ये फोल्ड हो गई प्लेट्स आपस में, और यहाँ पे कभी यहाँ पे एलिवेटेड एरिया, रिज या माउंटेन फॉर्म होता है, तो इसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। द माउंटेन्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग अप ऑफ लैंड आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो दो प्लेट्स आपस में आई, टकराई, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में आई, टकराई, और ये लैंड फोल्ड हो गई, तो फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन। हिमालयस भी एक फोल्ड माउंटेन ही है। सो थ्रस्ट फॉल्स are called thrust faults or convergent plate boundaries. So converge means to come together. So these convergent plate boundaries are boundaries where the convergent plate boundaries are boundaries where two tectonic plates come together and they compress each other. When an oceanic plate and a continental plate come together, the oceanic plate being thinner but heavier often goes down and the continental plate is lifted up. So since this part is subdued and is lost below the lithosphere in the asthenosphere, and that is why the thrust fault or convergent plate boundaries are also called destructive plate boundaries, because this oceanic landform is destroyed. These are also called compressional plate boundaries because two plates come together and compress each other. But in some cases, when two oceanic plates come together and they collide, then they both push against each other, and the land in this middle area is elevated, is folded, and that's how fold mountains are created. The Himalayas is an example of fold mountains. Then comes the normal fault or the divergent plate boundaries. So why this divergent plate boundaries? Sometimes because of the internal disturbances happening in the asthenosphere, the two tectonic plates don't come together, but they move away from each other. So they move away, exposing this area. And through this area, often new landforms emerge, and sometimes molten matter from the asthenosphere also emerges and cools off here. And a new landform is created. And that's why divergent faults or divergent plate boundaries are also called constructive plate boundaries, because new landforms emerge at this plate, at these boundaries. They are also called tensional plate boundaries. Why? Because when two things move away from each other, it doesn't happen without tension. There's always a tension when two things move away from each other. They pull away from each other, and there's a tension that is experienced in this area, in the middle area, which is pulling away from each other. So tension.
Third is a strike slip fault or a transformative plate boundaries. So यहाँ क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म कर देती हैं लैंडफॉर्म को, लेकिन इनको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई सबडक्शन हुआ और ना कोई फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ। तो यहाँ लैंडफॉर्म ना डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना क्रिएट हो रहा है, जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो प्लेट्स पास आती हैं और इस तरह से दो प्लेट्स आपस में लड़के निकल जाते हैं, तो इसमें कोई नया लैंडफॉर्म क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं। सो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट बाउंड्रीज are boundaries at boundaries between two tectonic plates which slip past each other, and they don't create or destroy a landform because of the slipping past. कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज को मुझे ऐसा लगता है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब कोई नया लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, फिर भी धरती हिल रही है और क्या होता है उसको हम समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इश्यूज की वजह से मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम है जिसके द्वारा ये समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज के निकट होता क्या है। तो दो कंजर्वेटिव प्लेट्स हैं और वो दोनों आपस में स्लिप होती हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती, कोई नीचे नहीं जाता, स्लिप होती हैं। स्लिप क्यों होती हैं और स्लिप होती है तो अर्थक्वेक क्यों आता है? तो ये देखिए, ये दो एक कंजर्वेटिव प्लेट है, ये दूसरी कंजर्वेटिव प्लेट है। नीचे यहाँ कहीं कोई फ्रिक्शन होता है, जब दो प्लेट्स आपस में स्लिप होती हैं तो वो मोटी प्लेट है, तो नीचे यहाँ कहीं कोई फ्रिक्शन हुआ, ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है और यही फोकस भी होगा, क्योंकि फोकस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ डिस्टर्बेंस बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ फोकस है, यहीं पे डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ से बॉडी वेव्स हर डायरेक्शन में जा रही है। फोकस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर ये पॉइंट है सरफेस के ऊपर, एपिसेंटर। अर्थक्वेक का इंपैक्ट यहाँ मैक्सिमम दिखेगा और यहीं पे अर्थक्वेक आएगा और फिर यहाँ से सरफेस वेव्स हर डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरा डायग्राम, सॉरी मैं ड्राइंग में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ये जो एपिसेंटर पॉइंट है, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में इस प्रकार जुड़ी होती है, उनके ऊपर पेड़, घास, मकान सब बने होते हैं, तो पता नहीं चलता है कि नीचे से वो दोनों प्लेट्स अलग हैं, ऊपर से एक ही दिखती है। तो एपिसेंटर पर ये जो पॉइंट होगा ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर होगा और यहीं से अर्थक्वेक के सरफेस वेव्स इमिट होंगे और फिर जमीन में कंपन होगा। तो ये सब जो होता है, just as I just told you, these two conservative plate boundaries, the plates slip over each other. There is this point of friction which also becomes the focus, because the focus is the point of initiation of the earthquake, initiation of the disturbance below the surface of the earth. So this is the focus, and the body waves will go in all directions from here, and directly perpendicular to the surface of the earth is to the surface of the focus would be the epicenter, and all the surface waves will be emitted from here, and this would be the point of maximum impact of the earthquake. Next slide. So the question arises, why do plates move? Of course, in science, everything has a reason. So if plates are moving and there are conservative plates boundaries, there are destructive plate boundaries, I'm sure there is something happening. There is some phenomenon that is responsible for the plates to move. So have you ever seen tea boiling in a saucepan? What happens? You mix the sugar, you mix the tea leaves, you mix the milk, you mix the water, and it starts boiling. And convection currents occur in the boiling tea in all directions. Sometimes there are diverging convection currents like this. Sometimes there are converging convection currents like this. You know, imagine a boiling pot of tea, just like the one shown here. The same thing happens in the asthenosphere. As I have discussed earlier, the asthenosphere is composed of partially molten rocks. And since these rocks are partially molten, kind of a semi-solid to liquid consistency, the heat within them causes convection currents in them.
in them, in the asthenosphere. And these convection currents cause a mixing of material in the asthenosphere. So this convection currents, which causes the churning of materials or the mixing of materials in the asthenosphere, also causes the tectonic plates, which are the lithospheric plates, to either converge or diverge. When the mixing of materials in the asthenosphere happens in a diverging pattern, like the convection currents are like this, the material goes like this, then the plates will also diverge. And when the mixing happens in a converging pattern, when the materials converge and mix among each other, then the plates also converge. For the converging and diverging convection currents to actually move the lithospheric plates, the convection currents have to be really strong, because convection currents happen inside the asthenosphere all the time. But to actually affect it and cause an earthquake, because of the movement of lithospheric plates, to move the lithospheric plates, the convection currents have to be really strong. And that is why lithospheric plates don't move all the time and they don't cause an earthquake all the time, because convection currents are happening, but not all of them are very powerful. When it's very powerful, then the lithospheric plates move with a jerk, and then the earthquake happens. Minor movement of lithospheric plate, like when an inch or so, keeps happening all the year round, and it has happened through ages, but that doesn't cause any visible change or any destructive change. But earthquake is a sudden change, and that only happens when there is a sudden jerk or movement in the lithospheric plate because of very powerful convection currents in this asthenosphere. क्या आपने कभी कोई चाय का पतीला देखा है? उसमें चाय किस प्रकार उबलती है? कभी चाय ऐसे उबलती है, कन्वर्ज आपस में मिलती है, कभी चाय ऐसे उबलती है कि आपस में पानी, चाय पत्ती, दूध सब अलग अलग हो रहे होते हैं. तो यही क्योंकि चाय का जो पतीला है उसमें जो सामान रखा है वो दूध, पानी, लिक्विड है, और उसमें जब हम चाय पत्ती और चीनी वगैरह डालते हैं तो कन्वेक्शन करंट्स गर्मी की वजह से नीचे से गर्म हो रहा होता है पतीला हीट अब्सॉर्ब करता है, गर्मी को सोखता है, और उससे पतीले में कन्वेक्शन करंट्स होती हैं, और उसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स या चर्निंग ऑफ मटेरियल्स होता है कि आपस में चीनी और चाय पत्ती और दूध सब घुल रहे होते हैं. इस प्रकार से एस्थेनोस्फीयर जो है वो पार्शियली सॉलिड और पार्शियली लिक्विड है. तो जो गर्मी होती है वहां पे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली रेडियो एक्टिव डिके होता है, उसकी वजह से गर्मी उत्पन्न होती है, और जब यही गर्मी जो होती है वो उस पार्शियली पिघले हुए सारे मटेरियल को आपस में कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है. कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, और एस्थेनोस्फीयर में जो सारा मैटर है, सारा मटेरियल है, वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा होता है. कॉन्स्टेंटली कन्वेक्शन करंट्स एस्थेनोस्फीयर में होते हैं. यही कन्वेक्शन करंट्स जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत पावरफुल, तो ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो भी हिलने लगती हैं. इनके वजह से, इनकी तेज जो चर्निंग मिक्सिंग होती है उसकी वजह से, जब पावरफुल मिक्सिंग होती है तो ऊपर के लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी हिलते हैं. कभी वो डाइवर्ज होते हैं, कभी वो कन्वर्ज होते हैं, और कभी सिर्फ स्लिप होते हैं. तो ये जो एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, क्योंकि वहां गर्मी है और गर्मी की वजह से पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड जो मटेरियल है वो आपस में मिक्स होता है, और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, ये एक फोकस है जहां अर्थ के लिथोस्फीयर के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, और ये जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, जो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसी को फोकस कहते हैं. द पॉइंट ऑफ origin of the earthquake below the surface of the earth is called the focus, and the point directly perpendicular to the focus on the surface of the earth is called the epicenter. The epicenter is the place where maximum impact of the earthquake is felt. जो फोकस से जो वेव्स निकलती हैं, the waves that originate from the focus are called body waves, and body waves are of two types: surface primary wave and secondary wave. Primary waves are called primary waves because they reach the seismic station first. Secondary waves are called secondary wave because they reach the seismic station second after the primary wave and are recorded later than the primary wave.
ये एक seismogram है. A seismogram is the output produced by the seismograph. Seismograph जो मशीन है वो output produce करती है on a piece of paper or on a screen, and that's called a seismogram. तो ये एक seismogram है. इसमें देखिए प्राइमरी वेव्स है, ये पहले पहुंचे हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स हैं, ये बाद में पहुंचे हैं, और फिर ये सर्फस वेव्स हैं जो कि एपिसेंटर से इमिट होते हैं. तो प्राइमरी वेव जो होते हैं उनका जो मोशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जैसे स्प्रिंग का मोशन होता है. लॉन्गिट्यूडनल कह लें, कंप्रेशनल कह लें, स्प्रिंग का मोशन होता है. हम उसको दबाते हैं, स्प्रिंग दबती है, फिर फैलती है, दबती है. सेकेंडरी वेव्स जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और उनका जो मोशन होता है वो रोप्स का मोशन होता है, ऐसे ऐसे. उसमें क्रस्ट होता है, उसमें ट्रफ होता है. और फिर सरफेस वेव्स हैं, उनका मोशन फिर एक भिन्न प्रकार का होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे आगे. तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जो बॉडी वेव है उनका ये नेचर होता है कि वो रिफ्लेक्शन, मतलब कहीं से वो रिफ्लेक्ट हो गई. रिफ्रैक्शन मतलब अपने पाथ, अपने रास्ते में थोड़ा बदलाव हुआ उनके, तो वो अर्थ की बॉडी के अंदर जाती है. दिस इज द एनालिसिस ऑफ seismic wave path. This is how body waves behave. Sometimes they are reflected, sometimes they are refracted from their natural paths. This is how body waves behave within the surface of the earth. And by the analysis of these body waves, do we know that the crust, the mantle, the outer core, and the inner core are different in nature from each other. And there are several discontinuities where the path of the wave is reflected or refracted, and there's a change in their velocity. And those discontinuities I will discuss in the later half of the video. यहाँ पर मैं जो अर्थक्वेक से निकले हुए प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होते हैं और बॉडी वेव्स और सरफेस वेव, उन सबको आपको समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा. कि ये लाइव वीडियो है जो किसी ने बनाया है, पाकिस्तान से है वो, और ये उनकी परमिशन लेके मैं ये आपको वीडियो दिखा रही हूँ. मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से वेव्स को डिस्क्राइब किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसे जरूर देखें. The shifting rock in an earthquake causes vibrations called seismic waves that travel within Earth or along its surface. Scientists use an instrument called a seismograph to record data about seismic waves. This yields information that can help scientists learn not only about earthquake behavior, but also about the structure of Earth itself. There are two broad classes of seismic waves: body waves and surface waves. Body waves travel within the body of Earth. They include P, or primary waves, and S, or secondary waves. P waves cause the ground to compress and expand, that is, to move back and forth, in the direction of travel. They are called primary waves because they are the first type of wave to arrive at seismic recording stations. P waves can travel through solids, liquids, and even gases. S waves shake the ground in a shearing or crosswise motion that is perpendicular to the direction of travel. These are the shake waves that move the ground up and down or from side to side. S waves are called secondary waves because they always arrive after P waves at seismic recording stations. Unlike P waves, S waves can travel only through solid materials. After both P and S waves have moved through the body of Earth, they are followed by surface waves, which travel along Earth's surface. Surface waves travel only through solid medium. They are slower moving than body waves, but are much larger and therefore more destructive. The two types of surface waves are named love waves and Rayleigh waves, after the scientists who identified them. Love waves have a horizontal motion that moves the surface from side to side, perpendicular to the direction the wave is traveling. Of the two surface waves, love waves move faster. Rayleigh waves cause the ground to shake in an elliptical pattern. This motion is similar to that observed in ocean waves. Of all the seismic waves, Rayleigh waves spread out the most, giving them a long duration on seismograph recordings.
डिसकंटिन्यूटीज। तो क्या होती है ये डिसकंटिन्यूटीज? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अंदरूनी उसकी जो बनावट है, उसके बारे में हमें पता चला साइज्मिक वेव्स की पढ़ाई करके। साइज्मिक वेव्स में स्पेशली बॉडी वेव्स, क्योंकि वो अर्थ की बॉडी के अंदर जाती थी, और उन्हीं की स्टडी करके हमें पता चला कि अर्थ के अंदर एक समान होमोजेनियस नहीं है, बल्कि अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग सतहों में बटा हुआ है, और हर एक सतह के बाद एक बाउंड्री होती है। जैसे कि अपर क्रस्ट होता है, फिर लोअर क्रस्ट होता है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री होती है, जहां से अपर क्रस्ट खत्म होता है और लोअर क्रस्ट शुरू होता है, इनके बीच में एक साइज्मिक वेलोसिटी में एक फर्क महसूस किया गया। वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो जो साइज्मिक वेव्स की स्पीड और डायरेक्शन में कुछ बदलाव महसूस किया गया, कुछ डिसकंटिन्यूएशन हुआ, उसी को हम कहते हैं discontinuity. So the boundary between two consecutive layers within the earth where a change in the velocity of seismic waves is noted is called a discontinuity. I repeat, the boundary between two layers of the earth where a change in velocity of seismic waves is noted is called a discontinuity. So the first discontinuity is the Conrad discontinuity. It's named after its discoverer, Mr. Victor Conrad. It lies in the crust. So the crust is made up of two rocks, which are chemically categorized as Cr, which is silicon and aluminium, and Sima, which is silicon and magnesium. The rocks which have majority of silicon and aluminium in them are lighter and lie on the upper crust. The rocks which have majority of silicon and magnesium in them are somewhat heavier and form the lower crust. So the discontinuity, the change in velocity observed between the upper crust and the lower crust, that boundary, that discontinuity is called the Conrad discontinuity. Then comes the Moho discontinuity or the Mohorovičić discontinuity. It's named after its discoverer, Andrija Mohorovičić, and that's why it's called Moho or Mohorovičić discontinuity. This discontinuity also lies within the lithosphere. The boundary between the Earth's crust and the uppermost part of the mantle, together they form the lithosphere, we already know that. So the boundary between the Earth's crust and the uppermost part of the mantle, where a change in velocity of seismic waves is noted, is called the Moho discontinuity. Then comes the Repetí discontinuity. The boundary between upper mantle and lower mantle is marked by the Repetí discontinuity. Repetí, whatever it is called, I'm sorry. Then the boundary between the lower mantle and the outer core, there is a clear difference between the chemical composition of the lower mantle and the outer core. And that's how there's a change in velocity that is experienced when the body waves pass through these two layers. And the boundary where this change of velocity happens is called the Guttenberg discontinuity. So the discontinuity lying between lower mantle and outer core is the Guttenberg discontinuity. The discontinuity or the change in velocity in the seismic waves when experienced between outer core and inner core is called the Lehman discontinuity. तो outer core और inner core के बीच में जो discontinuity है, जहां की seismic waves की velocity में एक change नोट किया जाता है, उसको हम Lehman discontinuity कहते हैं. Lower mantle और outer core के बीच में भी एक change in velocity नोट किया जाता है. जिस बाउंड्री पर ये बदलाव होता है, जिस बाउंड्री पर ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, उसको हम कहते हैं गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी. फिर अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में भी एक बदलाव होता है वेलोसिटी में, साइज्मिक वेव्स की वेलोसिटी में, और उसको हम कहते हैं रिपीटी डिस्कंटिन्यूटी. और लिथोस्फेयर में क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंटल के बीच में भी एक डिस्कंटिन्यूटी, एक चेंज इन वेलोसिटी होता है साइज्मिक वेव्स का, और उसको हम कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी. और सबसे ऊपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक चेंज इन वेलोसिटी जो साइज्मिक वेव्स में नोट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी. ये चेंज ऑफ वेलोसिटी अक्सर होता है दो कारणों से. या तो रॉक्स के केमिकल कॉम्पोजिशन में फर्क है और जिसकी वजह से जो साइज्मिक वेव्स हैं उनके स्पीड या डायरेक्शन में कोई फर्क आता है, जैसे क्रस्ट में होता है, जैसे लिथोस्फेयर में होता है. इसके अलावा केमिकल कॉम्पोजिशन के अलावा मटेरियल स्टेट्स, यानी कि कुछ लेयर्स सॉलिड हैं, कुछ लेयर्स सेमी सॉलिड हैं. मटेरियल स्टेट्स जब चेंज होते हैं तो उसके बीच में भी
साइज्मिक वेव्स की वेलोसिटी मतलब स्पीड या डायरेक्शन में बदलाव आता है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर दो स्पीड या डायरेक्शन में से किसी भी एक चीज में बदलाव आया तो वेलोसिटी में बदलाव आता है। आई होप साइज्मिक डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जाना साइज्मिक डिसकंटिन्यूटी क्या है, फिर हमने जाना कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, हमने जाना कि कौन कौन से सरफेस वेव्स होते हैं और बॉडी वेव्स होते हैं और किस प्रकार सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स का बर्ताव अलग अलग होता है, वेव्स में रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब होता है। हमने जाना कि साइज्मोग्राम कैसा दिखता है और क्यों प्राइमरी वेव्स को प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स को सेकेंडरी वेव कहा जाता है। हमने जाना कि स्टेनोस्फीयर में कैसे तरंगें उठती हैं और जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलती हैं और फिर अर्थक्वेक आता है, और किस किस तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में किस प्रकार का व्यवहार करती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ कहाँ हैं। पूरी धरती ही टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी है, धरती का पूरा क्रस्ट पूरा लिथोस्फेरिक टेक्टोनिक प्लेट्स का बना है। किस किस प्रकार के अर्थक्वेक आते हैं। आई होप जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, इस वीडियो को बनाने में मुझे ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि कई सारे वीडियोस जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, इमेजेस जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो मैं नहीं दिखा पाई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इश्यूज की वजह से। इसलिए मैंने वो खुद ड्राइंग की, क्योंकि दूसरे की इमेज हम नहीं दिखा सकते या दूसरे का वीडियो हम नहीं दिखा सकते। तो इस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको हर वो कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का इशू हो जाता। So today's video was the most difficult one to make because I tried every which way to avoid copyright infringement issues, and that's why I created my own drawing. I have partly reshot this video just to avoid the copyright infringement issues, but still get all that information to you. So hopefully you like it. And if there's any question, any query, please let me know in the comments below and I'll certainly answer them. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.